हेलो एवरीवन, UPSCprep.com में आपका स्वागत है और मैं हूं निमिश कपूर। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो 2025 में प्रीलिम्स का आपका रिजल्ट भी चेंज कर सकता है, इसीलिए बहुत ही केयरफुली नेक्स्ट 15-20 मिनट्स इसको आराम से सुनिए। क्या इंटरनेशनल रिलेशंस प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है? इज इंटरनेशनल रिलेशंस इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स? इफ yes, how much? What are the elements we need to concentrate? इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो हम बात करेंगे एक बिगेस्ट मिसकंसेप्शन की। और क्या है ये मिसकंसेप्शन? कि इंटरनेशनल रिलेशंस सिर्फ मेंस के लिए, इज ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर मेंस, इट हैज नथिंग टू डू विद प्रीलिम्स। दिस इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन विच हैज कॉस्ट a lot of students their prelims attempt. So one thing very clearly being spelled out is that international relations is equally, if not more, important for prelims. तो क्या है syllabus और what are the elements in the syllabus of prelims which clearly point out करते हैं कि international relations और international events important है कि नहीं? तो नंबर 1 पॉइंट प्रीलिम्स के सिलेबस का है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मीन्स डायरेक्टली दैट इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इवेंट्स आर पार्ट ऑफ इट. That is the biggest first point in itself in prelims is this, number 1. Then there is Indian and world geography. I'll come to the parallels of कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ रिलेट करती है. फिर इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज में भी आजकल कैसे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, डिस्कशंस, मीटिंग्स, समिट्स इंपॉर्टेंट है. इनको सब मैं सम अप करूँगा, क्लियरली डिफाइन करूँगा किन एस्पेक्ट्स में आपको जो है इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रीलिम पर्सपेक्टिव से देखना और पढ़ना है. तो सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशंस और उसका रिलेशन क्या है अदर सब्जेक्ट के साथ. क्यों, वाई शुड आई इन्वेस्ट माई टाइम इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड व्हाट इज़ द रिटर्न आई कैन एक्सपेक्ट कि मुझे एट द एंड मुझे इतना रिटर्न मिलेगा अगर मैं इंटरनेशनल रिलेशन में इतना टाइम इन्वेस्ट करूँ. तो पहली बात जो है इंटरनेशनल इवेंट्स और करंट इवेंट्स फ्रॉम नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट. See, what I've tried to do is, firstly I'm trying to define, आपको मैं बता रहा हूँ किस तरीके से IR इम्पॉर्टेंट है. उसको मैं 2024 के क्वेश्चन से क्लियरली डिफाइन करूँगा कि कैसे आपका टाइम इंटरनेशनल रिलेशंस में जितना जाएगा कैसे वो आपको मल्टीपल रिटर्न देगा. इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, इसके लिए आप एक रेगुलर न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पढ़ते हैं, मे बी अ मंथली मैगजीन यू फॉलो, या यूपीएससी प्रेप में आप द हिंदू के डेली करंट अफेयर्स देखते हैं, राइट. रेगुलरली आप क्लासेस अटेंड करते हैं, तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को बहुत डीपली फोकस किया जाता है. इवन इन एडवांस्ड प्रोग्राम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को बहुत डीपली फोकस किया जाता है. फिर ये करंट अफेयर्स है, बट IR का रिलेशन करंट अफेयर्स तक लिमिटेड नहीं है. इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल इशूज़, हमने पिछले 2-3 साल में, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, इजराइल हमास, या रिसेंट क्राइसिस की बात हो, कितने इनिशिएटिव्स जो हुए, इन्वायरमेंटल समिट्स हो, इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंटरनेशनल इश्यूज़ का कैसे होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग को वो डायरेक्टली रिलेटेड है. यू कैन नॉट आइसोलेट इकोनॉमी फ्रॉम इंटरनेशनल इश्यूज एंड IR एज सच. जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस अगर आप क्वेश्चन देखेंगे जो मैं अभी जल्दी डिफाइन करूंगा, ज्योग्राफीज और ऐसे जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स है जिस पे हर साल कई क्वेश्चन पूछे जा रहे. दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ज्योग्राफी एंड रिसोर्स, जहाँ वर्ल्ड रिसोर्सेज की बात आती है, वो भी वाई सी रेंडमली यूपीएससी नहीं पूछेगा कि ये रिसोर्स यहाँ मिलता है या नहीं मिलता. ओनली इफ इट हैज बीन कवर्ड इन करंट अफेयर्स. एंड अगेन आई विल शो यू इन 2024 पेपर हाउ इट इज रिलेटेड. इन्वायरमेंटल डिप्लोमेसी के साथ COP 27, 28, अभी 29 आएगा, कैसे वो रिलेशन है उसका. तो इसमें डिप्लोमेसी
Bilateral, multilateral relationship are equally important along with the environmental diplomacy. Today we see कि multilateral agencies हों, चाहे वो bilateral discussions हों, environmental और environment के ऊपर discussions और decisions continuously लिए जाते हैं जब बात करें multilateral bilateral summits की. Location based geography, a very important element जो game changer बन चुका है, और वो सब डायरेक्टली रिलेटेड है इन सब टॉपिक्स के साथ. लोकेशन करंट अफेयर से पिक की जाती है, या कोई कहीं इकोनॉमिक इशू हुआ है जिसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट है, हो सकता है वहाँ जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट की हो सकती है, एक वर्ल्ड रिसोर्स जहाँ कहीं मिलता है किसी पर्टिकुलर एरिया में उसके ऊपर, या कहीं समिट्स हो. तो लोकेशन बेस्ड जोग्राफी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट. तो आई आर ऑन एन एवरेज कितना मार्क्स, हाउ मच टाइम यू शुड इन्वेस्ट, सब बात मैं स्टेप बाय स्टेप इस पे करूंगा. इंपॉर्टेंस क्या है इंटरनेशनल रिलेशन की? सबसे पहले बहुत ज़्यादा इजी है, बिकॉज ये काफ़ी करंट ओरिएंटेड है. आपको इसके लिए कोई फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है. फाउंडेशन, एक बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली पिक अप अ न्यूज़पेपर, उसमें जो इशू है उसको आप बेसिकली पढ़ के उसका ब्रीफ बैकग्राउंड पे जा सकते. उसके बाद उसके अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स है उसको कनेक्ट कर सकते हैं कोर सब्जेक्ट के साथ. और ये स्कोरिंग पोर्शन है प्रीलिम्स के लिए. इट इज येट, इवन दो ये इजी है, स्कोरिंग है, बट ये फिर भी सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड पोर्शन है प्रीलिम्स के लिए. हम सिर्फ और सिर्फ एक मंथली मैगजीन पिकअप करते हैं, या अगर कोई आप न्यूज़पेपर पढ़ते उसमें देख लेते, बट आप स्ट्रक्चर्ड वे से कभी आप प्रॉपरली इस सब्जेक्ट को आईआर को नहीं करते. 10 to 15 क्वेश्चंस एवरी ईयर, लास्ट 4-5 ईयर्स का पेपर उठा के देख लीजिए, 20 to 30 मार्क्स. इनफैक्ट लास्ट 3 ईयर्स में आपको टोटल 10 क्वेश्चंस मिलेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, जबकि हर साल 10 to 15 क्वेश्चंस आपको आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल इवेंट्स के ऊपर या उससे इन्फ्लुएंस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे. तो अब इसको एनालाइज करते हैं स्टेप बाय स्टेप. 2024 के वो क्वेश्चंस कैसे वो रिलेटेड हैं, कैसे आईआर उसमें डायरेक्ट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन था, कंसिडर फॉलोइंग कंट्रीज: फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे या रशिया. हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव अ बॉर्डर विद नॉर्थ सी. पहले आपको ये समझना है, फर्स्टली ये बहुत ही हॉटस्पॉट एरिया रहा. न्यूज़ में मैंने एक सिंपल द हिंदू से पिकअप करके रखा, चेक आउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड इन डेनमार्क वेयर 2 सीज मीट बट नेवर मिक्स. ये तो नॉर्थ सी के पर्सपेक्टिव से एक आर्टिकल आया, ये सिंपल. उसके अलावा यू हैव दिस रीजन विच वॉज इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन्स दैट यहाँ यू नो नॉर्वे, रशिया, फर्स्टली रशिया का तो आपको पता ही है, रशिया यूक्रेन वॉर. फिर फिनलैंड में, जर्मनी में, नॉर्वे में, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हमेशा न्यूज़ में रहती है किसी ना किसी कारण. रिसेंटली स्वीडन विच बिकेम अ मेंबर ऑफ नेटो. तो बाय डिफॉल्ट आपका एक प्रोएक्टिव अप्रोच रहनी चाहिए. व्हेन एवर अ पर्टिकुलर कंट्री इज मेंशन्ड इन न्यूज़, आप इमीडिएटली क्या करते हो, आप जाते हो मैप पर और आप देखते हो, अच्छा नॉर्वे, डेनमार्क. मैं डेनमार्क अगर न्यूज़ में है तो मैं आई नॉट स्टे लिमिटेड टू जस्ट लुकिंग एट ओके दिस इज डेनमार्क, बट आई लुक एट द फिजिकल फीचर्स अराउंड इट. नॉर्थ सी, okay, it is adjoining North Sea. So North Sea is adjoining what else? Norway, UK, Belgium, Netherlands, and Germany as well. And even Sweden. Sweden, which has been the newest member of NATO. And if I go back to the question, easily I can solve it, where Russia is not a part of it. Right? So easily I can, and Finland is not. तो उन दो को एलिमिनेट करके only 2 becomes the answer. See, इन क्वेश्चन के एनालिसिस में मेरा राइट आंसर पे पहुंचना मेरा इतना ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट अप्रोच पे ज़्यादा अभी मैं फोकस करूंगा. क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज 2 लार्जेस्ट कोको प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड. आपको लगेगा ओके, ज्योग्राफी, रिसोर्सेज, राइट.
But if you look at this 21 February 2024 The Hindu article, which says prices of cocoa beans shoot up to an all-time high due to short supply, and उसके नीचे लिखा है the major cocoa producers Ivory Coast and Ghana. How current affairs can help you, the international relations or international events or international news help you in understanding, helping in multiple subjects, and overall can fetch you so many marks easily. The organisms cicada, frog hopper, and pond skater are what? Birds, fish, insects, reptiles. चिकादास के ऊपर बहुत बेसिक न्यूज़ चल रही थी. व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस रेट डबल ब्रूड ऑफ चिकादास. इस साल डबल ब्रूड ऑफ चिकादास हुआ था. चिकादास क्या था? इंसेक्ट्स के ऊपर. हर न्यूज़पेपर ने इसको अपने न्यूज़पेपर में इसको इजीली इंक्लूड किया. तो वेरी इजीली इफ यू जस्ट नो चिकादास, तो चिकादास से आप इंसेक्ट यू कैन डेसिफर. सिमिलरली वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन 19 नवंबर एवरी ईयर वर्ल्ड टॉयलेट डे सेलिब्रेट होता है. उस पर कई इवेंट्स होते हैं. एंड इस पर बहुत वायरल वीडियो हुई थी कि बिल गेट्स एंटर्ड ब्रसेल्स सीवर ऑन वर्ल्ड टॉयलेट डे. एंड जो वर्ल्ड टॉयलेट डे है बेसिकली वो कौन ऑर्गेनाइज करता है? वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन. और आपके लिए वो क्यों बन जाता है उसको वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा और जानने के लिए. सिमिलरली क्वेश्चन about International Grains Council, and a lot of, if you know, there were articles about Black Sea Grain Initiative जहाँ IGC was also one of the stakeholders. यहाँ बात करें global rice prices were poised to climb higher. ये एक article आया था as India's export ban. If you remember, rice ban India ने implement किया था कई varieties पर, and उस पे IGC का reference भी था article. सिमिलरली यूएस का ये ट्रेजरी बॉन्ड्स के ऊपर या यूएस फेड के ऊपर एवरी सेकेंड डे यू फाइंड यूएस फेड reduced rates or increased rates because of rising or decreasing inflation, etc., and how it has impacted treasury bonds, etc. Easily you could have understood the relation. Again, economic and international issues, events, relationship you can develop. Moving forward, longest border between any two countries in the world. And again, I'm the Hindu का एक article December 14, 2023 का, that sharp rise in Indians illegally crossing US northern border from Canada. And यहाँ मेरे पास again एक क्यू आता है that I should understand, okay, what is the length of the border? Geographically इसको देखें. And automatically if I see that, I know the answer would be this, Canada and United States, because I would get to know that it is the longest border between any two countries. And consider following countries: Italy, Japan, Nigeria, South Korea, South Africa. We know that Japan, आपके NCERTs में Japan, South Korea covered है, जिसका low birth rates है और aging population है. But recently, you may not know that Italy's birth rate has also dropped to historic low, which has affected their demography. So they also have aging population. So through these articles like these, you can easily understand that what are the correct answers. Getting my point? So, easily how a newspaper, how your current affairs, how your interpretation of international relations, events, geography, economy can help you score big in prelims and help you clear that cutoff which you've been missing by 10 to 15 marks. So, country in news: Argentina, Sudan, Turkey. Haven't we seen so much about Argentina's economic crisis? Yes, they had one of the worst economic crises. Sudan they had a war between their paramilitary and the military because of their dispute between the vice president and the president in the Darfur region jo hai, and the remaining part of the country. Turkey has not resigned its membership of NATO. In fact, it has finally approved the membership of Sweden. So easily we can identify the correct answer if we are aware about what? International relations. Similarly, Mitra Shakti, you'll know it because if there is a bilateral discussion between India and Bangladesh, they would have agreed to particular kind of joint military exercises. Or if you are separately going through newspaper, you'll come across it.
Red Sea, so much in news, hundreds of articles about how Houthis, the militias, you know, bombarded missiles in the ships passing through the Red Sea region, right? And because of it, the discussion on Suez pipeline started. Suez is what? Suez and Mediterranean pipeline, an alternative route, isn't it? So easily you could have through this. So that is why, again, one of the very important things you have to understand is what is, especially in international relation, in a news. So that is why current affairs become very important. Then we come on to the subsequent questions. There is instability, Sahel region. And last year, you would have read that Niger, coup in Niger, and does it follow? Again, this is the Hindu article. Does it follow a wider pattern in Sahel? And it is clearly written, West African countries, they are had gone through multiple coups in the region. So easily, yes, there is instability and worsening security in the Sahel region. Yes, correct, fine. There have been military takeovers, coups. Yes, of course, because of this, there is this instability of worsening. So hence, A would become the correct answer. Easily, you can decipher it. India does not import apples from United States of America. If you go through economic data of the trade or the WTO dispute about India charging so much duty on apples being imported, you'll come to know. For example, or the second point, genetically modified food, the India law prohibits import without approval of competent authority. Correct? But they are not directly related. Here the question again was, if you understand, there was a WTO dispute of which finally a decision was made, which talked about removal of additional retaliatory duties for import of US apples have been made, and accordingly the final decision was made. This was PIB article, PIB, 26th June 2023, within a year of your exam, before exam. Consider the following statements. Venezuela has achieved rapid recovery. If you would have gone now, the elections in Venezuela, but before that, for 3-4 years, you know that Venezuela has been in the middle of controversy of mass exodus. People moving north trying to enter America. Yes, Venezuela has the world's largest oil reserves. So this is correct, this is incorrect. So lifting the wheel on the Venezuela migrant crisis. For last few years it's been going on. Clearly sums up how international relation is not just important, but an indispensable resource to clear this exam. So what should be the strategy for international relation for prelims? Newspaper becomes the key. Current affairs is key, and for that a newspaper is very important. From this, all the aspects of international relation you can easily cover. Integrate location-based geography with the newspaper on regular basis. Integrate that whenever you read, okay, there is issues in Sahel region. Where is Sahel? What is Sahel region? Which countries comprise Sahel region? 2. What are the, or if there's a Russia-Ukraine war, okay, what are the regions where currently the war is going on? What are the issues? Which regions? Israel, Iran, Hamas, then Lebanon currently, for example. Lebanon. Okay, Lebanon adjoining which other countries? What particular area? Like this. You just see on the map. Connect static subjects with international dynamics the way in economy, environment, science and tech, geography resources, right? Supplement with monthly magazine or online content. Monthly magazine, good. But there are some very good online content, and here I've given example like Observer Research Foundation, which covers international relations very dynamically, can give you a very clear advantage in international relations and understanding the dynamics of it. Remember, prelims is not just a factual exam anymore, but equally analytical in nature. So when you're reading international relation, that does not mean I need to cram a particular thing. It's understanding that how it is related with other subjects. And if you look at the questions, you understand that how it is becoming more analytical in nature.
So, focusing on IR, current affairs will give you highest return in prelims. Highest. So which current affairs? You keep on doing endless current affairs, but I tell you, the amount of time you will invest on international relations, current affairs, will give you the highest return possible. So this highest is basically international relations. And that is why I see this as the most important thing which you've been neglecting, most of you. And maybe this is the difference between you not clearing the prelims. This time, don't neglect international relations for prelims 2025 and make sure you do it and try to integrate that in your preparation so that it becomes your asset, not a liability. For more such videos, keep watching UPSCprep, follow both the channels, and we'll keep coming with more and more videos to help you in this journey. Thank you so much.